Hello everyone and welcome back to another video on partnership fundamentals. Before we start, I would like you to remind to subscribe to my channel if you haven't still subscribed so that you keep getting the recent updates. Also, thank you so much for all the thumbs up that you give me all the time. And a request to people who give me a thumbs down also that you please leave your valuable feedback so that I can work on improving on my videos, which is all again for your benefit. So let us start with the subtopic interest on loan from a partner. Now, a partnership firm and the partner are two separate entities. There is exchange of money in between them. Partner can give capital to the firm. Partner can also give money in the form of loan to the firm. Right? These two are separate things. Capital we have already discussed. So now let's focus on loan. For a firm, what is interest on loan? It is a liability, right? So when a partner has given a loan to the firm, उसने पैसा फर्म को दिया है, फर्म उसको बिजनेस में यूज कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट? तो ये पैसा या तो बैंक से भी लेता तो भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो पार्टनर से भी अगर लोन लेगा तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? सो इफ दिस इज क्लियर, a few important points need to be taken note of. First thing, interest allowed on loan is a charge against profit. Charge against profit we have already discussed कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मैंडेटरी है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. Even to arrive at the net profit, the correct net profit, we have to subtract this interest on loan as an expense from my income to get my profit or loss. तो ऐसा नहीं है कि लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे. ऑल्सो दिस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज अगेन ये कोई अप्रोप्रिएशन है ही नहीं. तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ये नहीं जाएगा कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन. इट विल बी डेबिटेड to the PL account, it is profit and loss account, because it's a charge against profit. ठीक है? And these are very small little things which students tend to overlook and they make errors in the journal entries. तो इसको थोड़ा याद रखो कि क्या करना है. Now, even if second point, the partnership deed is silent about interest on loan to the partner. कुछ नहीं बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या नहीं देना है, या देना है तो कितना रेट पे देना है. It's not mentioned. Even in that case, the Partnership Act says, the provisions of the Partnership Act lays down that every partner who has advanced money to the firm should get interest, and the rate is also specified, that is 6% per annum. 6% per annum. So this is to be noted. Interest is to be allowed at 6% per annum whether it is mentioned in the deed or not. Immaterial. ठीक है? देना ही होगा. Charge against profit. Then here the word 6% per annum is very important. Per annum meaning for the full year. एक पूरे साल के लिए अगर आपने लोन दिया है तो पूरे साल में 6% मिलेगा, राइट? लेकिन अगर सोचो तुमने सिर्फ 4 मंथ्स के लिए दिया है लोन, तो ऑब्वियसली फर्म पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देगा 6% पे. इट विल जस्ट गिव फॉर 4 मंथ्स टू द पार्टनर. ठीक है? सो दिस पर एनम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेनेवर यू आर आस्क्ड कि बाय डिफॉल्ट कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना चाहिए पार्टनर को लोन पे, तो 6% सिर्फ लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. यू हैव टू राइट 6% पर एनम. दैट्स द कंप्लीट आंसर. ओके. देन आल्सो समटाइम्स डीड में लिखा रहेगा कि पार्टनर्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन at the rate of say 10% per annum. In that case, what will you do? Will you say that मैं 6% per annum ही देना है? 6% कब देना है? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या डीड में मेंशन नहीं है, भाई डिफॉल्ट. लेकिन जब मेंशन है, भाई अग्री हो गया है, तो ये 6% का ही नहीं आ रहा है. ठीक है? इट इज द मेंशन रेट इन द पार्टनरशिप डीड. ओके? सो 6% comes into picture only when it is not agreed upon. Clear to clear? Okay, a few journal entries. जब फर्म पार्टनर से लोन लेता है, obviously बैंक में पैसा आ गया, so bank account debit to partners loan. Now this we are crediting because it's a liability for the firm, so credit कर दिया, right? पैसा आ गया फर्म में. इंटरेस्ट जब देना होगा यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर.
सो इंटरेस्ट पेड, तो ऑप्शन है फर्म के पास, या तो पे कर दो या फिर नहीं पे किया है तो एंट्री तो ड्यू का करना ही होगा बिकॉज इट इज अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहला देखते हैं, अगर पे कर दिया है तो इंटरेस्ट एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, since all expenses are to be debited to bank because you already paid it। ठीक, अगर ये पे कर दिया है तो ये एंट्री नहीं होगा, अगर नहीं पे किया है तो ये एंट्री होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ड्यू, ऐसा पे नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एंड देन इट्स एन एक्सपेंस टू पार्टनर्स लोन, नॉट टू बैंक, टू पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर के लोन के अकाउंट में ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी क्रेडिट होता है और क्रेडिट कर दे रहे इंटरेस्ट के अमाउंट से, तो अब पार्टनर के लोन के अकाउंट में कितना दिखेगा, लोन प्लस द इंटरेस्ट, टोटल लायबिलिटी दिखेगा पार्टनर्स के लोन अकाउंट। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस इंटरेस्ट ऑन लोन शुड नेवर बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अलग है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट लोन अकाउंट में जाएगा पार्टनर। ऑलराइट, देन टू क्लोज द एंट्री all nominal accounts need to be closed, so interest on loan कैसे close करेंगे, by transferring to profit and loss account। so profit and loss account debit to interest on loan account, तो ये loan interest on loan account close हो जाता है। ठीक है, so this is the basics of interest on loan from a partner। now this is again something different, interest on loan advance to a partner, what did change? First we discussed interest, or we were talking about the loan that the firm has taken from the partner। firm ने पैसा लिया पार्टनर से तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म के एक्सपेंस है। ये केस क्या है, एग्जैक्टली द ऑपोजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू अ पार्टनर। नाउ हु इज एडवांसिंग दिस लोन, द फर्म। फर्म पार्टनर को पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, तो ऑब्वियसली पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, right? This becomes an income for the firm। ठीक है, so now let us talk about this interest to be charged only if mentioned in the partnership deed, otherwise no interest will be charged। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा प्रीवियस केस में हम डिस्कस किए, जब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोविजन। सो अगर पार्टनरशिप डीड में अग्रीड नहीं है, दैट मीन्स कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है पार्टनर से। ऑल्सो द रेट शुड ऑल्सो बी स्पेसिफाइड। हाँ बोल दिया ठीक है इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर, लेकिन कोई रेट नहीं बोला है तो किस रेट पे देंगे, कहीं और कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर उस केस में भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है पार्टनर से। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, partners at the time of agreement should decide if at all they want to charge the partner for taking a loan from the firm। ठीक है, let us quickly go to the journal entries। जब लोन हम पार्टनर को देते हैं, firm gives the loan to the partner। of course loan to a partner it's an asset to me, उससे वापस रिकवर करेंगे, so I have debited that, right? asset increased। to bank of course पैसा बैंक से जा रहा है, so credit bank, right? Now again, if interest the partner is paid already to the firm, ये इंटरेस्ट इनकम है तो पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो स्पेसिफाइड हियर कि ये लोन पार्टनर को दिया था तो उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, नाउ इफ द पार्टनर हैज नॉट पेड, इट्स स्टिल ड्यू, वी कैन पास दैट एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट to interest on loan to partner, this again remains the same, या ये एंट्री होगा या ये एंट्री होगा, राइट? either or situation। now partners capital और current account क्यों डेबिट करें, लोन अकाउंट नहीं डेबिट करें, राइट? so you have to be very careful here। पिछले वाले में जब ड्यू था we were crediting partners loan account, here we are debiting that interest, charging the interest on the partners capital या current account। अभी capital या current account मतलब कब होगा कौन सा अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन विच मेथड। फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री, सिंस इट्स एन इनकम आई क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आई डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ओके, so these are the journal entries related to interest on loan
that we have given to a partner. The firm has given to a partner. Alright, so let's take a small sum. Ankit and Ruchit are partners in a firm. Ankit advanced a loan of 90,000 to the firm on 31st of July 2019. So 90,000 का फर्म ने लोन ले लिया अंकित से. कब लिया? 31st of July 2019. Right. Ruchit, on the other hand, took a loan of 15,000 from the firm on 31st October 2019. So Ruchit has taken a loan from the firm, Ankit has given a loan to the firm. Different dates, different amounts. The partnership deed states partner would be charged interest on loan taken at 8% per annum. अब इतना ही दिया है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर जब लोन लेगा तो किस रेट पे चार्ज करेंगे. Pass necessary journal entries for allowing and charging interest on loan for the year ending 31st March 2020. Okay, now this is the sum. Now when this is the sum, what are we supposed to do? Calculate interest on loan. Now first thing, अंकित जो लोन दिया है फर्म को उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं? Will Ankit get interest or not? Because partnership deed में कुछ लिखा नहीं. Okay, so we just discussed that, right? Partnership deed में जब कुछ नहीं दिया है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बात आता है पार्टनर्स का लोन पे, right? The loan that the firm has taken from the partner. In that case, partnership deed says 6% per annum के हिसाब से पार्टनर को लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, right? So here 90,000 is the amount Ankit has advanced to the firm. उस पे हम 6% पर annum के रेट से लेंगे. पर annum तो पूरे साल तो दिया नहीं. कब दिया उसने लोन? 31st of July. मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ हो गए. बाकी बचे कितने मंथ्स? राइट फ्रॉम जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त से लेके 31st मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 8 मंथ्स. तो हम उसको 8 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे. 8 by 12. ठीक है? दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 8. That comes to 3,600. तो अंकित को 3,600 इंटरेस्ट देना पड़ेगा. Okay? Coming to Ruchit. Ruchit has taken a loan from the firm. इसमें कोई पार्टनरशिप एक्ट का रोल नहीं है. डीड में अग्रीड है तो मिलेगा, नहीं तो लेना चार्ज करेंगे, वरना नहीं चार्ज करेंगे. डीड में मेंशन है कि 8% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा. So there's no confusion. 15,000 into 8%. अब कितने मंथ्स के लिए हम करेंगे? Because again per annum word is mentioned here. This loan was taken on 31st of October. अक्टूबर तक डन. उसके बाद क्या बचा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 5 months left. So 5 months का इंटरेस्ट रुचित से हम चार्ज कर सकते हैं. That is 500. जनरल एंट्रीज क्विकली ओनली द इंटरेस्ट का एंट्री पूछा है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म बिकॉज इट्स अंकित लोन वी टॉकिंग अबाउट. तो अंकित के अकाउंट पे 31st मार्च को ईयर एंडिंग में हम लोग एंट्री पास करें. अंकित के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बिकॉज इट्स नॉट मेंशन दैट वी हैव पेड द इंटरेस्ट, सो इट्स ड्यू 3,600. अगेन सेम डेट. रुचित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नॉट लोन, नॉट करंट अकाउंट. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि फिक्स कैपिटल मेथड है. So Ruchit's capital account is debited with 500 and interest on loan to Ruchit, right? So this is income for me. I have credited that 500. So I hope the interest on loans taken and advanced to partners is clear. Practice more sums on this and get back to my next video. Thank you so much for viewing my video. Do not forget to subscribe and like. Thank you.